Welcome back everyone. In this video we are going to discuss about organ system कि कैसे organ system जो है वो form होता है. So in order of size and increasing complexity, the body is composed of these things that form a system. सबसे पहले वो क्या चीज़ है? That is cells. We already discussed that in previous video कि cells होते क्या हैं? Cells are actually the smallest building unit that perform a function. Alright. In the case of human beings, they are multicellular. So we can say that these cells they all group together to that are actually performing the similar function. जो similar function perform करते हैं cells वो group करते हैं और they form a tissue. Alright. इस टाइम हम एग्जांपल ले रहे हैं किस ऑर्गन की? स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो हम देखते हैं कि उसमें कौन से सेल्स होंगे. वही सेल्स होंगे जो हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट फूड. ऑलराइट. तो ये सेल्स जो हैं वो टिश्यू फॉर्म करते हैं और वो टिश्यू जो है एंड दे ग्रुप टुगेदर दे फॉर्म अ लार्जर थिंग एंड दैट इज एन ऑर्गन. ठीक है. तो इन दिस केस स्टमक इज एन ऑर्गन. ऑलराइट. तो ये ऑर्गन जो है that is the function of this organ we have studied is that it digests food, but it cannot do this work alone. It needs other parts of the body to perform the whole system. ठीक है. तो जब organs they combine together to perform a system or perform a function, that is called a digestive system. या उसको हम क्या कहते हैं? organ system कहते हैं. इस टाइम हम एग्जांपल ले रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की. तो उसमें सबसे मेजर ऑर्गन क्या है? स्टमक. और स्टमक के साथ हमें और कौन से ऑर्गन्स रिक्वायर्ड होते हैं कि फॉर एग्जांपल वी नीड अ लिवर, वी नीड इंटेस्टाइन्स. ठीक है. फॉर एग्जांपल स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्जर इंटेस्टाइन दैट ब्रेक्स अप द फूड फर्दर. तो ये एक पूरा प्रोसेस है, एक पूरा सिस्टम है जिसके थ्रू हमारा फूड ब्रेक डाउन होता है एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेल एंड इट comes up to the organ system. Okay. We take another example in which we can say कि हम देखते हैं कि there is a cell that actually combines together to form a tissue. ठीक है. मैं आपको randomly draw करके दिखा रही हूँ कि किस तरह ये cells जो हैं आपस में combined होते हैं in order to form a tissue. और उसके बाद ये tissue जब they are in the form of muscles and then when they combine together they form a heart. ठीक है. तो वो कौन सा ऑर्गन फॉर्म करते हैं? हार्ट. एंड वी ऑल नो दैट हार्ट इज यूज्ड टू सर्कुलेट द ब्लड इन साइड आवर बॉडी. ठीक है. हमारी बॉडी के अंदर जितने भी बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो होता है इट्स एक्चुअली ड्यू टू आवर हार्ट. ठीक है. बट हार्ट अलोन कैन नॉट डू दिस होल वर्क. इट नीड्स अ सिस्टम. तो हम इस सिस्टम को क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है. तो हम इस सिस्टम को कहते हैं कि ये है सर्कुलेटरी सिस्टम और इसमें हमारी वेन्स आ जाती हैं, हमारी डिफरेंट यू नो चीज़ें आती हैं जो हमें हेल्प करती हैं इन ऑर्डर टू सर्कुलेट द ब्लड इनसाइड आवर बॉडी. सो इसी तरह अगर हम देखते हैं तो वी हैव musculoskeletal system that is the combination of skeletal and the muscles. और वो क्या परफॉर्म करते हैं? वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देते हैं और हमें डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं. ऑलराइट. हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं दैट डिस्क्राइब्स द organ systems. Let's move to the next part. In this thing we are going to discuss about the skeletal system. ठीक है. कि हमारी जो skeletal system है वो हमें कैसे help करती है और skeletal system में क्या चीज़ें include होती हैं. ठीक है. So skeletal system it gives us support to our body and it helps us to move around. ये हमारी body को support देती है, हमारे organs को support करती है so that we can move around. For example अगर हम देखते हैं these are called what? They are called the rib cages. ठीक है. तो ribs जो है वो हमें क्या करती हैं कि it protects our heart, it protects our lungs and it protects all the other organs that needs to be protected in order to perform a function, that needs a support to perform different
functions. So these are the places where the ribs are. You can see the skull is over here और इसको हम skull कहते हैं इन bones को. ठीक है. Remember skeleton system is actually made up of bones. तो इसमें हमारा मेजर चीज क्या है कि ये bones से बनी होती हैं. ठीक है. So we can see इसके अलावा हमारे पास और क्या एग्जांपल है. We can see that there is a spinal cord over here. ठीक है. जो हमारी बैकबोन जिसको हम कहते हैं और ये बैकबोन जो है it performs a major function in our body. इसके बगैर we can't move around, we cannot walk around. ठीक है. इसके अलावा we have a bone over here that's called फीमर. ऑलराइट. और फीमर जो है वो एक्चुअली हमारी लेग्स में बोन होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं मूव अराउंड करने में. इसके अलावा वी हैव bones over here that are for our hands. And let's just discuss the basic things so that we can get the idea that how these different bones helps and protects our organ system. Alright. So you can say in this कि हर सिस्टम जो है वो दूसरे सिस्टम से रिलेटेड है, कनेक्टेड है और एक सिस्टम की एब्सेंस की वजह से दूसरा सिस्टम कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता. Alright? We're going to discuss more of the functions in the next video. See you guys later.